Good morning, students. Today we are going to take a new topic from the semester 3, that is paper 4th, and the name of the paper, you know it, that is nothing but the industrial hygiene and chemical safety. And the unit 3 covers normally the disaster management and the risk assessment. So under this you have to find out, or you have to study certain natural hazards, and one of the natural hazards that is said to be the flood. So one of the natural disaster which causes the hazards, so you can consider flood is one of the natural disaster. So what is flood? So our topic is flood. The topic flood defines. So what is flood? Flood is nothing but it is an overflow of water. You can say that what is flood? It is an overflow of water that submerges land that is usually dry. So what do you mean by flood? Flood एक क्या है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है, और इसके कारण क्या होता है, पानी क्या होता है, लैंड पे पूरा जो भी कंटेंट ऑफ द लैंड जो भी है वो इट इज अंडर द वाटर, एंड यू कैन से दैट अ लॉन्ग पार्ट ऑफ द अर्थ का बहुत ऐसा पार्ट होता है दैट इज सबमर्ज अंडर द वाटर फॉर सेवरल डेज. सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए अगर ये टेक्स प्लेस करता है तो इसे हम फ्लड नहीं कहेंगे. व्हेन अ लॉन्ग पार्ट ऑफ अर्थ इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए अगर पानी के अंदर में few parts of the earth is submerged, then it is said to be flood. So you can say that flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. Next, flood can also occur in rivers also. It is not like it always occurs on the land, but it also occurs in the river when the flow rate exceeds the capacity of the river channels. So when the flow rate it normally exceeds the rate of, or you can say that it exceeds the capacity of river. मतलब रिवर की कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर पानी उसमें ऐड किया जाता है then it is said to be the flood in the river. And this normally occurs where there is a bend or certain meandering is done. So you can say that the flood is one of the natural disaster, and in this disaster most part of the earth या फिर part of the earth is under the water for few or several days. And you know that India is mostly affected by means of the flood, and country like Bangladesh, India is the worst affected country after the Bangladesh. So Bangladesh is one of the again flood affected, flood prone area. Next, in India we can face that there are certain states which are highly prone to this flood. So we can say that these are the states which are prone to the flood, like UP, Bihar, West Bengal, Assam and Orissa. So you can find out these are certain states which are frequently facing the flood in every 5 to 6 years. Here we know that flood is normally caused in India, or this is normal to the India. Why? Because of the monsoon. So here in case of India, because of intense monsoon we can face the flood, or the certain states of India faces the flood, and certain states which are non-flooded prone area like Andhra Pradesh, where there you can find out the shortage of the water also takes place. Karnataka, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. These are certain states where
normally flood is not at all, it is, or you can say that, negligible. But last year all itself Kolhapur has faced the flood. River causing floods. So there are some examples of certain rivers which are causing the flood. They are Ganga, Yamuna, Ghagra, Koshi, Gandak, Godavari, Krishna, etc. So these are the rivers. They normally uh, causes the flooding in the different states. So wherever they used to pass, and wherever they used to pass through the cities, they causes the flood. Next, coming up to the why this flood normally causes, और यू कैन से दैट द कॉजेस ऑफ द फ्लड, मतलब ये फ्लड होने का मेन कारण क्या है. सो यू कैन से दैट दिस फ्लड इज नॉर्मली कॉज्ड बाय टू रीजन. दो कारणों के कारण ये फ्लड टेक्स प्लेस करता है, और टू और मोर देन टू रीजंस आर देयर फॉर द causing the flood. One most important, that is natural causes. Certain natural causes are responsible for causing the flood, and certain man-made causes are there for this happening of this flood. So natural causes include the prolonged rainfall. यहाँ पे बहुत टाइम के लिए रेनफॉल होती है, मे बी ड्यू टू दी हिली रीजन, माउंटेन रीजन. हाई रेनफॉल यहाँ पे होता है. ओवरफ्लो ऑफ द रिवर ऑल्सो टेक्स प्लेस होता है. लैंडस्लाइड एंड वल्कनिक इरप्शन आर वेरी फ्रीक्वेंट टू दिस प्लेसेस. Blocking of the river passages always takes place, and tsunami in the coastal area. These are the, you can say that, the natural causes which causes the flood. Next, coming up to the man-made causes. So what are the man-made causes? The man-made causes are normally construction. Like Mumbai like cities we can take in consideration for the construction. So false construction or improper construction may cause the flooding of that particular region. Urbanization, it is one of the concrete. Normally हम क्या करते हैं, हर जगह से प्लांट को कट कर करके हम पानी को पेनिट्रेट होने नहीं देते हैं. It only always settles on the ground, और it's नुस्तो saturate, सिर्फ और सिर्फ saturate होता है पानी. So you can say that maybe due to the cause of urbanization, due to the alteration of the river passage. रिवर का जो पाथ है उसमें क्या होता है, बदलाव होता है, और इट ऑलवेज टेक अ न्यू पाथ फॉर the flow. Next is construction of dam, bridges, storage bodies, etc etc. So हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं डैम के कंस्ट्रक्शन होने के कारण हम क्या करते हैं, लॉट अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम, एंड समटाइम ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन और सर्टेन, यू कैन से दैट डैम में कुछ भी प्रकार का अगर समझो कोलैप्स हो जाता है, इट कॉज द फ्लडिंग. सो डिफॉरेस्टेशन इज अगेन one of the example of the man-made causes. Deforestation, cutting of the forest, you can say this is the main reason. Because of this, the fertile land is converted into this, normally you can say that कि ये जो सॉइल होता है डायरेक्टली दे आर एक्सपोज टू दी वाटर, एंड दी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन द वाटर डज नॉट पेनिट्रेट इनटू दी अर्थ सरफेस. नेक्स्ट, you can also say that farming is again one of the example of man-made causes. So the faulty way of farming is one of the example or cause of the man-made causes. नेक्स्ट, चेंज इन द यूज ऑफ लैंड का कैसे यूज करना चाहिए उसमें भी, मतलब एक ही प्रकार का प्लांटेशन, लाइक कोल्हापुर लाइक सिटीज, इफ यू आर कंसिडर देयर ओनली वन टाइप ऑफ प्लांटेशन इज नॉर्मली adopted, that is sugar cane. So maybe faulty way of farming, change in the use of land, etc. may be the reason for the man-made causes. So you can say that the causes of the flood may be normally divided into two. They may be natural or the man-made causes. Next, coming up to the human activities. This also is one of the man-made causes. The human activities, they are causing the flood. How this human activity causes the flood? फर्स्ट वन इज ड्रेनेज एंड रिक्लेम वेटलैंड्स फॉर द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए जो ड्रेन लैंड है उसको यूटिलाइज करते हैं. दूसरा, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द बीच के रीजन में से सैंड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. नेक्स्ट इज द
mining, like extraction processes, maybe due to this we are facing the flood. Next is destroying mangroves. जो mangroves हमारे coastal region में present रहते हैं उसे हम remove करने से क्या होता है, flood will takes place. Damage of the coral reef also is one of the human activities. Deforestation and the soil erosion. So deforestation, soil erosion, these are all the human or man-made causes where somewhere human beings are responsible for the flood or one of the disaster, you can say. Next, coming up to the damage due to the flood. So you can say that from 1950 to 1965, within the 15 years, one can assume that there may be the occurrence of flood 3 times. So from 70 to 75, so from 71 to 75, here you can say that 3 times within these 4 years, 3 times the occurrence of flood has been taken place. And from 76 to 78, 5 times flood has normally struck that region. Maximum flood normally takes in few states like Bihar, UP, AP, and Andhra Pradesh, and the West Bengal. So you can say that these are certain states which are flood prone area. Next, coming up to the effects of flood. So how does this flood affects the properties or human being? So first effect is that main is the death of the human and animals take place. Next is the destruction of the कंस्ट्रक्शन. जो भी कंस्ट्रक्शन किया उन सब का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, फिर भी एक प्रकार का प्रॉपर्टी लॉस हम बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का डिस्ट्रक्शन होता है, वाटर सप्लाई ब्रेक होता है, रोड, crop field is under the totally submerged under the water. So these are the things which are totally submerged under the water, and after few days it also affects the health of the human beings because of the impure water, uncontaminated water. It causes the diseases, causing disease, or it affects the health of the human beings and causes certain diseases which are epidemic. So somewhere they are affecting the human beings, not only human being or the and also the animals, and sometimes in severe cases cause the death also. Now coming up to the last point, that is management of the flood. So how to manage? So management of flood, it comes under the you can say that mitigation measures. So mitigation measures or flood mitigation involves the management. So it involves the management and the control. तो mitigation क्या होता है, management and control दोनों को क्या करता है, involve करता है. Now coming up to the management, that is delay in reaching the surface run of water to the river. मतलब हम फ्लड को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हम फ्लड को तब मैनेज कर सकते हैं जब हम जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको, उनके जो फ्लो है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं. अगर हमने फ्लो ऑफ वाटर को डिले कर दिया, देन वी कैन प्रिवेंट द फ्लडिंग. सो हाउ दिस कैन बी डन? सो delaying in the reaching the surface run of water to the river. रिवर में जाने से पहले surface run of water मतलब हिली रीजन हो गया आपका, कोई भी हिली रीजन हो गया, यहाँ से जो भी सरफेस रन ऑफ वाटर आ रहा है, ये पानी आने के बाद वो रिवर में ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो in order to avoid or prevent or minimize the mixing the surface water into the river, what we can do is that we have to
मेक यूज ऑफ द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, दैट इज ग्रोइंग ऑफ द न्यू प्लांट्स। सो जहाँ कहीं पॉसिबल है देयर वी हैव टू grow the plants. Next is watershed management. If the water is can be restored on a particular dug well type of the in or we can say that digging the land surface and storing the water, तो watershed management करके हम क्या कर सकते हैं, we can delay the surface run of water reaching to the river. Next is that forest hinder rapid flow of the water. फॉरेस्ट क्या करता है, और नेक्स्ट हाउ वी कैन अचीव दिस टू थिंग्स बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या करता है, इट हिंडर्स रैपिड फ्लो ऑफ वाटर। जो पानी का बहाव होता है उसको क्या करता है, वो कम करता है। इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन, वो क्या करता है पानी को, इट अलाउज द वाटर टू penetrate deep into the earth crust and prevent the soil erosion। वहाँ पे soil erosion होता नहीं है, and includes the water or increase the water holding capacity of the river, you can say that. So if we allow the forest to grow, then the flooding can be stopped in one way or the another way, or it can be minimized. Next is management of the rapid discharge of the river, or you can say how this can be achieved by means of curve should be amended। मतलब पानी का जहाँ पे भी बहाव है उस बहाव को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना, कुछ कर्व हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सो बाय मीन्स ऑफ मेंडरिंग, और यू कैन से बाय मीन्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कर्व we can achieve this. Next is that reduction of water volume of the river। पानी का जो वॉल्यूम, रिवर का जो वॉल्यूम है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड देन स्टोरिंग इनसाइड द डैम। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द फ्लड डाइवर्शन सिस्टम। हम क्या कर सकते हैं, फ्लड डाइवर्शन सिस्टम का यूटिलाइजेशन, ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द फ्लड कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ फ्लड, it comes under the mitigation itself, and the most effective way, besides this, the most effective way of reducing the risk to the people and property is through the production of flood map, flood map, फ्लड रिस्क मैप। हम क्या कर सकते हैं कि एक मोस्ट इफेक्टिव वे है जिससे हम रिस्क कम कर सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ हम क्या करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द फ्लड रिस्क मैप हम तैयार करते हैं। सो दिस वाटर रीचेस टू what all region, in which year the flooding takes place, it affects which all region, कौन कौन से रीजन में वो पानी बह के जाता है, कहाँ कहाँ पे। ये मैप अगर हम हमारे पास अवेलेबल होगा तो we can easily handle this conditions. And what do you mean by the map? Map is nothing, it is shown, this map or risk map, ये जो map होता है, it is nothing but the it shows the area prone to flood, So we can say that it is the most effective way of reducing the risk of the people and property is through the production of flood risk map। हम अगर फ्लड रिस्क मैप अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो we can almost prevent or minimize the risk. Next, one more last point is that most suitable way of reducing risk। suitable way हम कैसे हम reduce कर सकते हैं risk को, reducing the risk, how, by means of further development in flood prone
प्रोन एरिया। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फ्लड प्रोन एरिया, पहले हम मैप क्रिएट करेंगे कि कौन कौन से ईयर में फ्लड यहाँ पे टेक्स प्लेस किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट कम होना चाहिए, या फिर वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होने नहीं दिया जाए। और इसके लिए हम वी कैन से दैट, और यू कैन कंक्लूड दैट कि मोस्ट सुटेबल वे ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क इज टू प्रिवेंट फर्दर डेवलपमेंट इन द फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया में फर्दर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए in order to reduce the risk. So this was regarding the flood. See you tomorrow with the next topic. Thank you for watching.